So good afternoon, everyone. I am Prajakta from the marketing team at LEAD. And on behalf of LEAD, I would like to welcome you all to the live webinar on NEP 2020, Making Learning Engaging, Hands-on, and Conceptual for Students. So this webinar is the seventh one in our series of free webinars, where we talk about various topics relevant to school owners and principals. And today we will have with us Professor Manish Jain, who works at Center for Creative Learning at IIT Gandhinagar. Professor Manish Jain is an excellent offshore scientist with multiple US patents. He also has the expertise to spark innovation and creativity via puzzles, visuals, toys, graphs, and other such unique means in his sessions. With his extensive knowledge and experience, I'm sure you'll gain a lot from today's session. So without further ado, I would request Professor Manish Jain to kindly initiate the session. Thank you so much, Prajakta. I mean, the only thing that I feel about the session is that I can talk to. There are not many participants. There are only 24 of us. So if I would request that we can have this session as, if ever whoever wants to sort of ask, we can let them ask questions or talk or comment or whichever way. Let this be a two-way interaction since we are not. So anyways, thank you so much for inviting me. It is just a pleasure. Like I said, it seems odd that I'm speaking to three icons which are sitting in front of me. It's a little odd, so hopefully I'll get in the flow soon. But it's a pleasure. I remember Prajakta calling me a while back, and she said that this is something that they're looking at, and I don't know. Like she said. You will gain or not gain. I don't know whether you will gain anything or not. I'm just here to share with you some of the experiences that we've had, working in this lab that we call Center for Creative Learning. The picture that you see right now here, this is the next picture that you should see. This was shot about, 3 days ago, where this 288 first-year BTech students who came and joined IIT Gandhinagar as their first semester, they made this logo that you see with 4,000 straight lines of thread. That logo that you see here and those numbers, IIT Gandhinagar FP 2022, all those are done with 4,000 straight black lines. So you can see how straight lines can lead to very interesting designs. And it apparently turns out that this was also a world record. I mean, whatever, Guinness record, which we didn't know at that time. This was about 7.5 square meters wide, 10 feet diameter, which and it was a lot of fun and joy and an engagement. Some people say that attention span of our children is not that much. Maybe you guys sort of believe that. आजकल के बच्चों को मन नहीं लगता है. And these kids were sitting from 10 in the morning till 7 in the evening. ये 6 बजे की शाम की पिक्चर है. Exposure, we had increased the exposure, and that's why you see light. But it's basically just, it sort of comes and proves that हमको अपने बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज देनी पड़ेगी, और वो देते हैं तो engagement and things happen. And that is what I think NEP wants to talk about. So this is what our lab looks like. This was also shot a while ago, I think 7 days back. Almost everybody is there. The background that you see, this is how our lab looks like in IIT Gandhinagar. And the goal of the lab, or what we try to do, is to bring back that lost gleam in the eyes of our teachers and children and adults. And I think that is pretty much, if I summarize, that might also be the goal of NEP, in some sense, that is what. And I guess right? It's like, I don't know what Gyan I'll give you. Like, she said that you will gain something. I don't know about that, but I'm here to share some of the experiences. And for that, how many stages in NEP, sir? What is the main objective of NEP? Interesting questions. And I hope some of those, I don't know if I have the answers, but let me start with that. Let me start with this question that is sitting on your screen. And hopefully you see this on your screens. And I would like that you go to this website, itempool.com/CCL/live, and try to answer this question. And it might sound like a very personal question to you, but I would still request you to answer.
What is the relationship that you are in? Love marriage, arranged marriage, heart is somewhere else, or given up? And I hope if you answer, then these bars will show up. And there is a catch to this question, of course. And I'm not talking about your personal relationship, although that is what it might seem like. I'm talking about the relationship to the profession that you guys are all in. What is that relationship that we have with whatever we are, professing or whatever we are doing? That is what I'm talking about. So, I mean, there are 45, 51, 52 people. It will be nice if people can come and answer. Please go to itempool.com/ccl/live. Number 1, love marriage. Number 2, arranged marriage. Number 3, heart is somewhere else. And the 4th one is given up. So, जो भी सही उत्तर है वो आप दे सकते हैं. I see only, I don't think I see a lot of answers. I think people are answering in the chat. So it will be nice if you go to itempool.com, because that way the answers are visible on the screen itself, right in front of you. You will see those answers. So I just typed only one person has answered, as I can see. एक ही उत्तर है. I'll type the website address. itempool.com/ccl/live. Yeah, please type it in the Zoom. So there will be few more questions that I'll ask, hopefully similar or in the same light or maybe different, but yeah. And when I was discussing last night with Prajakta about the, how we are going to this seminar, she said, oh, this is a common seminar and some people come and, they might disrupt. And that's the reason we are having this only icons talking to you. I really wish we could talk to real people, because that's where the joy is. And I think that is what real sense of NEP is. And that is what I'm going to focus on. Hopefully. Arzu, let me see what chat में देखना होता है. Chat में अरेंज मैरिज, सबकी अरेंज मैरिज है. अभिलाषा, DPS Kolar Road. Please text the website and address. Website is itempool.com/ccl/live. I mean, if you put it as HTTP, people can just click. Yeah. Prajakta, if you add the HTTP thing. Done. अरेंज मैरिज. अरे भैया, कोई लव मैरिज वाला नहीं है? किसी का डिवोर्स भी हो चुका है. People have given up. Heart is somewhere else. Okay, here you go. Some more answers popping in. 59 of us. So, the total should come on to 59. Please try to see if you can answer. DPS Kolar Road. A lot of DPSs. Bhopal. Chanchal Singh Kaushik, DPS Bhopal. Rishika Solanki, DPS Bhopal. Okay. I'm just giving you time. This is just a warm-up thing, and hopefully we'll build some steam in. या आप बोलेगी, ये प्रोजेक्टा बोलेगी आपको अगली बार नहीं बुलाएंगे, बहुत रो रहा है, बट आई विश लोग जो है ना स्क्रीन पर आ जाएं तो कुछ बात करने में मजा आता है. Next time definitely हम लोग, मतलब because right now because of technical limitations we cannot change the meeting format. Okay. That's why, yeah. I'm hoping आपको ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है. अगर आपको ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं क्या म्यूजिक है. वो आप चैट में बता सकते हैं. But really, let's see what answers do we have. ठीक है. So let me just look at some of the answers. 12 लोगों ने आंसर दिए हैं. आपने शायद चैट पर करा है. And I can switch on to finish and reveal. These are your answers. Only 2 people have answered. I don't know what the right answer is. Some people have said love marriage, some have said arranged marriage, and of course, like I said, I didn't want to break this thing right in front. But I said, the purpose of asking this question was not really, your personal situation or whatever. But I think the most important thing in doing anything in education, or rather for anything, is the purpose that you are in this relationship. And I think that is something I would say is missing, right? I mean, I don't know about you, but largely the people that we talk to, it's बहुत तरह के किसी से हमारे यहाँ वर्कशॉप में टीचर्स आते हैं, काफी सारे टीचर्स आते हैं केंद्रीय विद्यालय के, प्राइवेट स्कूल्स, and this is the first question that we ask, what kind of relationship you are in, and it turns out that बहुत तरीके की relationships होती है ना यार. And I wish all of us can be in this with the profession that we are in, this relationship of
ये ही हम करने के लिए आए हैं. And it doesn't really matter what the principal says. It doesn't really matter what the management says. This is what we're going to do. And not because उससे कुछ देश बदल जाएगा या दुनिया बदल जाएगी या क्लास बदल जाएगी, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा. And that, in my opinion, is the most important thing. That in my opinion, that in fact, if I were the PM or CM or DM और जो शिक्षा को निर्धारित करते हैं, the most or just hiring somebody, right? The most important question that I will do is आपकी ये relationship क्या है? आपकी कौन सी relationship है? आपकी arranged marriage? And I wish the best thing that we can achieve for this workshop or whatever that we are doing is that सर पहले तो arranged marriage थी, लेकिन इस talk के बाद अब थोड़ी love marriage में बदल गई है, right? And I think that is what we are looking. I think that if we do that, if we can sort of achieve or aim for that, I think is the and let me start you कि अभी ऐसी स्थिति है क्यों. तो उसके लिए मैं एक और सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने खिचड़ी खाई है? हाथ उठा लीजिए, जूम पर आंसर कर सकते हैं ना. कितने लोगों ने खिचड़ी खाई है? तो यू कैन ऑल आंसर. एंड खिचड़ी, लेट मी डिफाइन यू. खिचड़ी इज बॉइल्ड राइस एंड बॉइल्ड दाल, उबली हुई दाल और उबले हुए चावल, और नमक नहीं है. वो वाली खिचड़ी कितने लोगों ने खाई है? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं. कितने लोगों ने खिचड़ी खाई है? और कल्पना करिए, दिस इज सैटरडे एंड लेट्स से lead schools has sent you a notice that all of the people who have joined the webinar for the next 3 days will only eat खिचड़ी. उबली हुई दाल और उबले हुए चावल खाएंगे और उसमें नमक नहीं है. तो कल सुबह आपका नाश्ता क्या होगा? खिचड़ी. ब्रेकफास्ट क्या होगा? ब्रेकफास्ट क्या होगा? खिचड़ी. लंच खिचड़ी, डिनर खिचड़ी. अगले दिन फिर सुबह ब्रेकफास्ट खिचड़ी, लंच खिचड़ी, और चाय में कुछ नहीं है. पता चला चाय के साथ आपने पकौड़े उड़ा दिए. No, we are not doing. I actually also forgot. Maybe I should ask. मुझे याद नहीं रहा कि किस लैंग्वेज में हम बात करें. नॉर्मली आई ट्राई टू आई डोंट नो, आप लोगों को शायद आजकल एक्चुअली वर्कशॉप्स का बहुत बड़ा, ये ऑनलाइन चक्कर का बहुत बड़ा झमेला है. प्रिंसिपल से मैसेज आ गया कि आपको ये ज्वाइन करना है. सो आई डोंट नो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना. प्रिंसिपल से मैसेज आ गया, कहीं मैनेजमेंट ने बोला कि आपको ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई बुढ़ा आएगा IIT से और वो आपको कुछ ज्ञान देगा NEP के बारे में, तो आपको सबको ज्वाइन करना है. एंड देन यू विल हैव टू अपडेट कि क्या हुआ. एंड आपको बहुत गुस्सा आ रहा है. तो आपको गुस्सा आ रहा है और आपको गाली देनी है, तो कल्पना करिए किस भाषा में देंगे. अंग्रेजी में देंगे कि हिंदी में देंगे? तो आप कहेंगे यार अंग्रेजी में देंगे तो मजा नहीं आएगा, हिंदी में देके दिल की बात निकल आएगी. एंड आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी नॉट दैट कि यहाँ पर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, बट द फैक्ट दैट जब हम अपने दिल की बात करना चाहते हैं या मन की बात करना चाहते हैं, तो वो हमेशा मातृभाषा में होती है. And I'm just saying this because I might start speaking in Hindi in the middle or whatever most of the time, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ज्ञान देने या सिखाने या सीखने के लिए नहीं आया हूँ. I am just here to tell you some stories and share my experiences. और जब दिल से बात करते हैं तो अपने आप वो मातृभाषा में चली जाती है. तो मैं इसलिए हिंदी में अगर बोल रहा हूँ और आपको समझना है तो आप बता दीजिए. I will try to translate. I can speak 2 languages, but largely the goal is to share this, and that's why I was saying I wish we could have had a in face-to-face talk, but nonetheless. So coming back, तो मैं ये कह रहा था कि मैं हिंदी में ही ज्यादातर बोलूंगा, क्षमा है उसके लिए. लेकिन अगर आपको मेरी हिंदी समझ ना आए तो आप मुझे बताइए, and I will be very happy to translate or speak in English, or translate in the language that you probably understand more. Anyway, so हम खिचड़ी पर थे. पहले दिन आपने 3 टाइम खिचड़ी खा ली, अगले दिन फिर से 3 टाइम खिचड़ी, तीसरे दिन फिर से सुबह खिचड़ी, दोपहर को खिचड़ी और शाम को खिचड़ी. चौथे दिन अगर आपके सामने खिचड़ी आपके सामने आ जाए, खानी नहीं है, सिर्फ सामने आ गई, तो क्या करेंगे? देख कर ही उल्टी आ जाएगी. जो कुछ अंदर है बाहर निकल जाएगा. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों के साथ यही काम कर रहे हैं. वी आर सर्विंग देम खिचड़ी ऑफ द करिकुलम, एंड वी जस्टिफाई सेइंग दैट. वी जस्ट से, ओ ये तो बहुत जरूरी है, आपको तो खिचड़ी खानी पड़ेगी, ये तो करिकुलम है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा. राइट? इमेजिन 19,200 hours of खिचड़ी. You know how 8 hours a day, 200 days and 12 years in a row. The problem is बच्चे तो ये खिचड़ी खाकर 12 साल में निकल जाते हैं. आपके और हमारे जैसे टीचर जब तक कब्र में हमारे पांव नहीं लटक जाते या कब्र में नहीं पहुंच जाते, तब तक यही खिचड़ी खिलाते रहते हैं. And that I think is the most important thing in that is ailing our system. बच्चों को ना तो मजा आ रहा है और ना ही कुछ समझ आ रहा है. उनका टाइम खराब हो रहा है, उनकी जिंदगी खराब हो रही है. The kind of skills that our children need in the classes are not what we are giving them in the school. Why is it that the children drop out? Half our students drop out of our schools. राइट? और नहीं तो हम लोग उनको नौकरियों के लोभ में जाकर उनको बोलते हैं कि हमारे स्कूल में आओ कि इससे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी. मजा आया क्या?
आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके प्रिंसिपल जब आपको बोले, और मैं आपको ये और कुछ हो ना हो, एक बहुत सुंदर चीज जरूर बताऊंगा, तो आपको लगे हाँ यार आज ये जो 76 लोग हैं, 76 पीपल, इनको लगे हाँ यार आज लाइफ में कुछ मिल गया। मैं बताता हूँ और आप जुड़े रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। और आजकल जो इंटरनेट पे जो वेबिनार का इतना बड़ा वो प्रचलन चल रहा है, लोग आगे ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं और टाइम खराब करते हैं, उससे बचने का, या लाइव वर्कशॉप में भी उससे बचने का एक बहुत सुंदर उपाय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पूछें 10 बार ताकि आपको लगे कि कुछ बढ़िया चीज बताइए। बट एनीवेज, आई विल नॉट वेट यू, आई विल नॉट लेट यू वेट टिल द एंड, आई विल टेल यू दिस, एंड दिस इज बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद अस। यू नो, वी रन दिस लैब कॉल्ड सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग इन आईआईटी गांधीनगर, जिसकी मैं आपको चित्र दिखा रहा था अभी थोड़े दिन पहले। हमारे लैब के, हमारे यहाँ काफी सारे टीचर्स आते हैं, हमने कुछ कुछ प्रोग्राम करे हैं इंटरनेट पर, वो थोड़े से फेमस भी हो गए। पिछली बार एक प्रोग्राम करा था, यू नो, लेट मी टेल यू दिस स्टोरी फर्स्ट। तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स हमारे यहाँ वर्कशॉप के लिए आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द वेबिनार्स क्या होता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं और वो फोन तकिए के नीचे पड़ा है, उसके ऊपर तकिया रख दिया, हो गई हमारी वेबिनार। प्रिंसिपल ने बोला था हाँ भाई करनी है, तो हमने कर ली भाई, वो फोन पे लगा दिया, फोन के ऊपर तकिया रख दिया, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ मतलब नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम है, हमने बोला वीडियो ऑन कर दो, अब आप कहाँ बैठे हैं, यू नो, पीपल आर सिटिंग इन प्लेसेस वेयर दे शुड बी, एंड यू नो इट इज वेरी हार्ड टू स्विच ऑन द वीडियोस, बिकॉज वो तो जरूरी है, नोटिस आ गया, करना है, वर्कशॉप में जाना है। तो अगर आपको गलती से, और हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऊपर से नोटिस आ जाता है कि आपको 22 दिन तक आईआईटी गांधीनगर में जाकर वर्कशॉप करनी है, वहां पर आपको कुछ ज्ञान बांटेंगे आईआईटी के लोग। तो पहले ही लोग डर जाते हैं कि आईआईटी में लोग कोट पैंट पहन के आएंगे और पता नहीं क्या पीपीटी चलाएंगे, और मतलब इतना इतना पकाएंगे कि जिंदगी खराब हो जाएगी। तो दे आर वेरी वेरी जस्ट, यू नो, वेबिनार्स आर लाइक अ, बिल्कुल बर्बाद कर देती है जिंदगी। ये जो कोविड के टाइम में वेबिनार्स ने जिंदगी खराब कर दी। एनीवेज, तो ऐसा ही कुछ हुआ। एक्चुअली वो फेस टू फेस वर्कशॉप थी, 22 दिन की थी। टीचर्स आ गए, गर्मी बहुत ज्यादा है अहमदाबाद में। एक टीचर आई थी, इतनी गुस्सा, शुरू शुरू में पहले दिन पता नहीं कहां पर फंस गए। इनफैक्ट उल्टा भी होता है कुछ लोग इन वर्कशॉप्स में आगे खुश भी होते हैं, क्योंकि आपको 12 दिन तक अपने परिवार से छुट्टी मिल गई, आपको मुक्ति मिल गई। यू हैव अ वैलिड रीजन टू गेट आउट ऑफ योर फैमिली एंड डू व्हाटएवर यू वांट। तो कम, कुछ टीचर्स तो बहुत खुश थे, कुछ टीचर काफी दुखी थे। उनके पास एक बड़ी पानी की बोतल, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, शी हैड अ वेरी बिग ह्यूज वाटर बॉटल विद हर। तो हमें पूछा, मैडम इतनी बड़ी वाटर बॉटल क्यों लाए हो आप, छोटी सी से काम चलता है? कहते नो सर, बड़ा काम आती है ये जो बोरिंग वेबिनार्स है उनसे, और वो भी बोरिंग वर्कशॉप्स है एक्चुअली, वो तो सीधी ऑनलाइन, आई मीन इट वाज अ फेस टू फेस वर्कशॉप। बोरिंग वर्कशॉप से बचने का बहुत बढ़िया इंतजाम है। आपके पास बड़ी बोतल होगी ना, तो आपको पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर पानी भरने जाना है, प्लीज जाएंगे, अब कौन मना करेगा, है ना, एंड द स्पीकर विल नॉट फील बैड। तो आप बाहर जा सकते हो, और फिर बाहर गए तो फिर कौन पूछता है आओ कि नहीं आओ। और एक और कारण है, इतना पानी पियोगे तो बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा, तो बाथरूम में जाने के लिए एक बार और यू हैव अ रीजन टू गेट आउट ऑफ द वर्कशॉप, एंड दैट इज व्हाई शी वाज, you know, she carried this large water bottle with her, and I'm not making this story up. This is exactly what is happening in our workshops or whatever we are trying to do. This is what our transaction is. It is so brainless, it is so dead, it is so insipid, it is no joy, there is no life. तो क्या करेंगे वहां पर जाकर? कितनी देर तक हम अपने बच्चों को या टीचर्स को सिर्फ नौकरी के कारण उनको जबरदस्ती में काम कराते रहेंगे और बच्चों का जिंदगी खराब, मतलब whatever. And that is what NEP is trying to do. It is trying to bring back life in our system. It is bring back to look at education not just as a utility value की नौकरी मिल जाएगी आपको, आईआईटी में दाखला मिल जाएगा, उसके बाद आप गूगल के नौकर बन जाना या ट्विटर के बन के फिर ले ऑफ हो जाना. But you know that is not the point. The point is that there is something much more magical about education. There is something so joyous about these things that is what we have to share in our school. That is what NEP talks about, and that is exactly what we try to do in this lab. And that is the reason why you know I was sort of doing chip design for a long time. I did my undergrad from IIT Kanpur long back, and then I was at Stanford. वहाँ पर कुछ पढ़ाई कर रहे थे. I was in the Bay Area working for a this large chip design company जो आप लोगों ने सुना है शायद, स्नैपड्रैगन नाम की कोई चिप होती है ना, कॉलकॉम में उस समय बन रही थी. So we used to go to San Diego and work on all of that. And anyways, all of that happened, and then something very interesting happened. There was this test called the PISA test. That happened in 2009. Front page news, India was 73 out of 73 countries. 73 देशों में 73 था. मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ. We were 73 out of 73 countries in science, mathematics and language, and not just government schools. These were all schools. ये आपने कुछ हटा दिया. ये आपको पिन, हाँ, sorry.
These were all schools, government schools, private schools, you know, you name it. सारे schools थे. भारत का नंबर 73 देशों में 73 था, because we were only focusing on definitions. 73 out of 73. So math, science, and language, right? And this front page news, right? And it is sad, because that is exactly what. And when I read this news, I said, "यार इतना तो बुरा हाल नहीं है." That's when I decided that I want to sort of leave the things that I was doing and sort of focus on something more interesting, engaging, inspiring. वो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. And I don't know मैं आपको और क्या कहानी सुनाने वाला था, वो भूल गया मैं इसके पहले, पीसा के पहले. Anyways, चलिए, like I was saying, the most important goal. हाँ, मैं ये कह रहा था कि yeah. No, I was saying that is the reason. We were in 2009 when this test came out. Sare school, they were asking. Imagine this is the question that pops up on your screen. चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं. Next सवाल कहाँ गया हमारा? एक और सवाल पूछ लेते हैं. Next. Okay, this is a question that is coming on your screen. Let us see if you can sort of look at that and give us the answers. Okay, there are two shops selling iron. Shop A sells at 100 rupees a kg. Shop B sells at 100 rupees a liter. Which shop will you buy the iron from? Shop A because loha ठोस hai, because iron is solid. Shop B because loha is piglava, it is basically liquid. Shop A because you will get more. Shop B because you will get more. महंगाई का जमाना है, नहीं खरीदेंगे. All right. So these are 4 questions. Please, it will be nice if you can go to this website, itempool.com/CCL Prajakta. Uska वापस से link डाल दो. Let's see if you can. 2 shops selling iron. Which iron will you buy? 100 rupees a kg or 100 rupees a liter? I've shared the link in the chat. Please So click please, on if you guys can go to the link and just give us the answers. Shop A, shop B. I'm seeing the answers mostly in the chat. Please try to go to the website and give the answers. That way you can see it on the screen. A or B दिखाई दे रहे हैं मुझे. I think most people are used to this Zoom chat. They're not used to this website thing. And hence, हाँ, एक बार बड़ा आपको, I'm sure आपको दिख रहा है कि एक बार बहुत बड़ा हो रहा है. इसको मैं नीचे खिसका देता हूँ बार को. You can see the bar now, right? हाँ, देखिए कुछ लोग ने तो उत्तर देने चालू कर दिए बार पर. एक गेस करिए 9 नंबर क्या है. All right. There are 2 shops selling iron. ये भी पूछ सकते हैं कितने लोग तीसरी पास हैं. This is class 5. This is the concept that we teach in grade 5. All right, some people are right there. ये music, I hope आपको अच्छा लग रहा होगा. ये music जो पीछे चल रहा है. And you can also tell what this music is. ठीक है, let's look at the answers. Time is running away, so I will just share the answers with you. Finish and well. तो ज्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया वो गलत था. A because लोहा ठोस है. Of course लोहा ठोस है, नहीं ऐसा नहीं है. And I want to talk about why I asked you this question and one more, just to convey what is it that we're talking about, right? You see the answers right there. 6 people, in my opinion, gave the right answers. We were talking about iron, and this is grade 3, grade 5. 5वें में हम ये सिखाते हैं कि डेंसिटी की परिभाषा क्या है. वेट बाय वॉल्यूम. दिस इज 1 liter of iron. ये 1 लीटर लोहा है. 1 लीटर लोहा कैसे? 1 लीटर की बोतल में अगर लोहा भर दें तो जितना लोहा होता है वो 1 लीटर लोहा है. एंड यू कैन नाउ ऑलमोस्ट फील दैट दिस इज अबाउट 7 kg. जबकि आप 1 किलो लोहा लेंगे तो 1 किलो ही मिलेगा, लेकिन 1 लीटर लोहा लेंगे तो ये लेंगे, क्योंकि लोहे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, 7 है. और मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो लोहा 1 किलो. इनफैक्ट हम सोचते हैं कि जब लोहा है तो पिघला हुआ लोहा होगा तब लीटर में मिलेगा. नहीं, लीटर इज द डेफिनेशन ऑफ unit of volume. So anything that has volume. In fact, grade 3 or grade 5, when we say V is equal to LBH, I'm sure आप लोगों ने रटा होगा. उस LBH में अपन क्या करते हैं? उसमें हम क्या कहते हैं? V is equal to LBH and
एक सेकेंड, मेरा इसमें थोड़ा सा ब्रेक लैग आ रहा है, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू सी इफ ये लैग क्यों आ रहा है। ये फाइल डॉक्स व्यू व्यू दैट्स नहीं, तो ठीक है, चलिए जो भी है। हाँ, मैं कह रहा था कि v is equal to length, breadth and height, and if you remember grade 5 we will have this block cuboidal. We said v is equal to length time breadth time height, so which means that if you have a block of iron which is 10 centimeter in length, 10 centimeter wide and 10 centimeter high, it will be 10 times 10 times 10,000 cc 1 liter. 1 लीटर का जो लोहे का ब्लॉक है वो उसको पिघला हुआ नहीं होना है, वो तो सॉलिड ही है, उसका वॉल्यूम है, वो जगह घेरता है। तो अगर आप वॉल्यूम में लेते, इनफैक्ट दैट इज व्हाट Pisa was asking about, and that is what we did. Every single one of us, almost all of us, bought in liters, I mean in kg, because हमने सोचा कि वॉल्यूम तो सिर्फ लीटर तो सिर्फ और ये सवाल हमारे से जिंदगी से हमारे से जुड़े हैं। तो हमने लोहा खरीदा तो 8 गुना कम लोहा लिया। इसी तरह अगर मैं बोलता आपको तेल खरीद लीजिए 1 kg ऑफ ऑयल और 1 लीटर ऑफ ऑयल, हम सब लोग लीटर में ऑयल लेके आए। तेल ले तो किलो में ले और लोहा ले तो लीटर में लेंगे, तब ज्यादा आएगा, बिकॉज लाइटर ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर एंड आयरन इज मोर डेंस देन वाटर, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. We have to look at all of these things that we do in our curriculum more conceptually, and things that we take and do in the classes. तब बच्चों को समझ आती है, 4 तरीकों से इनफैक्ट समझ आती है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, करके समझ आती है, विभिन्न कॉन्टेक्स्ट और उदाहरणों से समझ आती है। करके मतलब हाथों से जब कुछ करते हैं तब हमारी समझ बढ़ती है। When we use multimodal inputs, multisensorial inputs, हमें लगता है सिर्फ दिमाग से समझ आती है, नहीं। जब तक मैं अगर अपने हाथ नहीं चलाऊं तो मैं बोल भी नहीं सकता. I cannot communicate if I don't move my hands. So I cannot say all my understanding is sitting right here. No, it's in my hands. If you tie my hands, I'll be very, uncomfortable, or maybe I cannot even express whatever is sitting inside. So the research says that जो हमारी sir, actually I think okay, your video was stuck. I don't know बाकी लोग के लिए भी stuck था क्या? We could hear you. बस आपका वीडियो अटक, अभी ठीक है? No, Prajakta, it was absolutely clear for me. So okay. I think it might have been some Wi-Fi issue at maybe at your end. Okay. It was absolute. It's always been very clear. I have not had any issue at all. Okay. Yeah, sorry. Over to you, Professor. Okay, sorry. Actually, age का problem है मेरे साथ. बीच में कुछ गड़बड़ होना तो I just get. No, sir, you've been extremely clear, and your video has also been playing fine. There has been no lag. It's been clear. ठीक. हाँ जी. एक सेकंड रुकिए, अब मुझे वापस से ना कुछ करना पड़ेगा। आई डोंट नो मैं कहाँ पर था, भूल गया। So you were on the sensorial aspect of it, that हाँ, मैं ये कह रहा था कि 4 तरीकों से समझ आती है। एक तो मल्टी मोडल मल्टी सेंसोरियल इनपुट्स, हमें हाथों से भी वो इनपुट्स डालने पड़ेंगे, छूकर इनपुट्स डालने पड़ेंगे, देख कर डालने पड़ेंगे, और ऑफकोर्स दिमाग में जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। सो मल्टी सेंसोरियल बना के समझ आती है और परसिवियर करके समझ आती है। ऐसे सवाल दें कि दिमाग की बत्ती जला दे। We have to ask questions which will make our children sit on that problem. वो दिमाग में अगर प्रॉब्लम घुस गई, अब तो उसका जब तक उत्तर नहीं आएगा हमको नींद नहीं आएगी। Are we doing this in our classes and schools? And then of course the last thing is that we'll have to do by having these transactions, सवाल पूछकर, children have to express, they have to be all in build it up. कंस्ट्रक्टिव फिलोसफी या उसको जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, मैं इस चीजों के उदाहरण, दिस इज व्हाट NEP टॉक्स अबाउट. It has to be joyous, hands-on, experiential learning. It cannot just be some text which the author came up with. उसने किताब में लिख दिया, किताब से बोर्ड में लिख दिया, बोर्ड से फिर रफ कॉपी में आ गया, रफ से फिर कॉपी में आ गया और फिर एग्जाम की कॉपी में चला गया. So it's just the transaction of letters from one place to the other. एक जो अक्षर हैं वो अलग अलग जगह से चल के कहीं पहले मेरे दिमाग से, मैं अगर ऑथर हूं तो interestingly I am also involved in writing the next math textbook for NCERT. So hopefully कुछ करने की कोशिश करेंगे. Let's see what happens. Given that NEP का NCF, the early childhood NCF is out, we are still working on the middle NCF, middle grades NCF, and hopefully then that book will also start. We have started on the lower end book. But what I'm trying to say is that is what NEP, NEP कुछ इस तरह से, it is doing something that we should have looked at long back, and this is the need of the hour.
हमारे बच्चों को ना तो मजा आ रहा है और ना ही उनको सीख मिल रही है। हम सिर्फ उनको एग्जाम पास करा रहे हैं और कुछ डिग्रियां देते हैं और कुछ नंबर दे देते हैं, और नंबर भी बहुत बड़ा बड़ा के दे देते हैं सीबीएसई में। बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। वी आर ओनली पुशिंग देम टू डू एजुकेशन नॉट फॉर द जॉय ऑफ इट, नॉट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, बट समथिंग वेरी यूटिलिटेरियन। वो जरूरी है, नौकरी मिले जरूरी है, काम मिले जरूरी है, लेकिन क्या वही है? इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, मैं आपको, मुझे बहुत सारे मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था हमारी कमेटी में, एनईपी की कमेटी में डिस्कशन चल रहा था, क्लास 10 में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ानी चाहिए कि नहीं? एंड मे बी आई शुड टेक अ पोल राइट हियर, नॉट दैट वी विल डू एनीथिंग विद दैट, बट द क्वेश्चन वाज, शुड वी टीच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू आवर चिल्ड्रन इन grade 10? Because I guarantee you 99.99999% of you will never ever use quadratic equation in your lives. आप कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, गारंटी है, कभी नहीं करेंगे। तो पढ़ानी चाहिए क्या? सब लोगों ने बोला नहीं सर, कभी तो याद नहीं आएगी, कभी जिंदगी में काम नहीं आती है, वी शुड नेवर टीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हटा दो, करिकुलम से निकाल दो। बहुत अच्छी बात है, करिकुलम से निकाल देते हैं तो करिकुलम कम हो जाएगा। You know, the way we teach quadratic equation, will say y is equal to ax square plus bx plus c, and the roots of this quadratic equation is minus b plus minus root square of b square minus 4ac upon 2a. ऐसा कुछ बोल देते हैं. That is all there is to quadratic. Now, let me tell you a story. Let me tell you a story that if I give every single one of you a ball and a cricket bat, and I ask you to hit the ball, जितनी जोर से आप मार सकते हैं, कैसे भी, किसी भी एंगल पर, 90 पे मत मारिए, 90 पे मारेंगे तो सर पे गिरेगी, बट 90 पे ना मारकर आप किसी भी एंगल पर बॉल को कैसे भी मारे, कितनी भी जोर से मारे, कोई भी मारे, आप मारे, विराट मारे, धोनी मारे, रोहित शर्मा जो बहुत अपेरेंटली बहुत अच्छा नहीं खेले या जो भी है, एनीबॉडी हु हिट्स, कोई भी मारे, कोई भी धोनी मारे, कोई भी आगे मारे, धक्का मारे, कोई भी मारे, आप मारे, मैं मारू, कोई भी मारे, द बॉल विल ऑलवेज फॉल 5 meters in the first second. Always. The ball will always fall 5 meters in the first second, 15 in the second, 25 in the third, 35 in the fourth, and so on and so forth. 5, 15, 25, 35, 45, 55, like that. Hamisha, every single place, no matter who hits, no matter at what angle, no matter with what power. This is the definition of quadratic equation. That is exactly what quadratic equation is. The distance that it falls keeps on increasing, उतने amount से बढ़ता जाए. ये quadratic equation है भाई. अब मुझे लगता है कि अब अगर आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो बिल्कुल पढ़ानी चाहिए, बिकॉज हर चीज में हम यूटिलिटी नहीं देखते. आप कभी पिक्चर देखने जाते हैं, म्यूजियम देखने जाते हैं, तब पूछते हैं कि यार ये कभी जिंदगी में काम आएगा क्या? तब तो नहीं पूछते, तब तो हम कहते हैं हाँ मजा आया कि नहीं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी रियलाइज्ड आफ्टर डूइंग दिस program on YouTube, which is the 30-30 program called the 30-30 STEM, which is right here. We did this program on YouTube called 30-30 STEM. अगर आपको मौका मिले तो कभी देखिएगा. You can just Google 30-30 STEM. Almost 2 crore plus people watched this program. 5 lakh people registered for this program. 17 minutes of average watch time. मतलब समझते हैं आप? अगर आप एक बार फंस गए तो 17 मिनट तो आपके हम खा लेंगे. We did 27 episodes, 2 crore people watched, 17 minutes of watch time. And the second Eklavya series, which was follow-up of 30-30 STEM, 40 lakh people registered and paid us money. It was the largest crowdsourced, crowd-funded program in the history ever. Crowdsourced people gave IIT, our lab, so 118, 236 rupees, जिसमें से, all of that stuff. It was a crowdsourced program. And people watched for 18 minutes. 2 lakh people registered for the program, 2 crore views. और वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने वहां पर कुछ आपको, we just talked, but interesting science, interesting mathematics, things that happen all around us. हमारी आसपास की जिंदगी को करिकुलम में घुसाकर उसको इंटरेस्टिंग बनाए. पाठ्यक्रम में जिंदगी का तड़का, spicing up the curriculum, literally. And that was the idea. Now, if you do that, then we are not talking about utility. I am saying this is how it has to be. और ये कर करके हमें ये चीजें समझ आई, which I think is the crux of what NEP tries to do. And let me show you that. Anything that we do in the class has to have these 3 ingredients, in my opinion. I don't know आपने ये पिक्चर देखी है कि नहीं, but ये पिक्चर है धमाल, right? ये होना चाहिए. क्या आपको मजा आया कि नहीं? Did you enjoy? You as in the teacher and as well as the children who are attending the class, right? If I now you've come to this workshop, right? कोई आपसे पूछे अपनी जिंदगी के आधे घंटे रिवाइंड करके देखो कि इस वर्कशॉप में या इस वेबिनार में क्यों आए थे, यार फिर वहां पे बोर होंगे, कुछ होगा. No, did you enjoy? And I think that is the most important thing.
or one of the three most important. And we did not know this. We realized this after doing this program. ये जब हमने YouTube पर प्रोग्राम करा, 2 करोड़ लोगों ने देखा और जब फीडबैक दिया, तब हमें समझ आया कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स होने बहुत जरूरी हैं. पहला, धमाल, मजा आया कि नहीं. दूसरा, तारे जमीन पर, आपने कुछ सीखा क्या जो हम आपको बताने आए थे, या आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही बताने आए थे, जो भी करने आए थे वो हुआ क्या. और तीसरी सबसे जरूरी बात है 3 इडियट्स. Did anything, any joke, any story, any toy, any activity, did it touch your heart? Because education after all is not just cerebral, it's a heart to heart connection. एक टीचर का और एक बच्चे का जो कनेक्शन होता है वो बहुत जरूरी है. और इसीलिए मैं आपसे वो जो बात कर रहा था, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, वो खेल आता है. It is not just very cerebral exercise of transferring something that is here, आपका दिमाग खोल के उसके अंदर घुसा दिया. No, it is a very joyous, it's a very life force, souls, whatever, all of that stuff and energy, and that can happen when only we do a lot of things combined. बहुत सारा सिर्फ कागज पेंसिल से करेंगे कुछ नहीं होगा और कहीं तक पहुंचे भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ खिलौने, कुछ एक्टिविटीज, कुछ आई थिंक आई हैव अबाउट 10-20 minutes in which I will show you a few things, just to prove that these 4 things. मैं आपको ये ले चलता हूं इधर. ये आपको शायद, हाँ, ये we could do that but टाइम कम है तो, but this is the joy that I'm talking about. Hopefully आपको दिखाई देगा. आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज So when you are sharing your video, you will have to go to the option there and say share sound. No, don't worry. कल चेक कर रहा था यार, ये सब नहीं तो चाहिए थी. इसमें भी आवाज नहीं आ रही है? No sir, not. Oh, 1 minute. I know. क्यों नहीं है? And I will fix it. Give me just 1 minute. हाँ, ये हमने गलती कर दी है. फेस में सिस्टम डाल दिया, उसमें नहीं डाला. पीपीटी में सिस्टम नहीं डाला. Copy. Okay, give me just 1 second and it should come. Otherwise, paste reference. All right. अब आ रही है? Can you hear now? Okay, great. So this is what I was talking about. This is the joy that, and this is the thought that I'm going to show you in a minute. This was shot about a few years ago in Palampur, and this is the toy that I'm going to show you right now. This is a simple rubber and 2 straws, and 2 simple straws, which we have joined here using glue. And when I put this in water and blow, you see what happens. All right. एक तरफ से सीटी बजी, अब इस तरह से कर देते हैं और अब फूंक मारते हैं तो देखिए क्या होता है. It's a spray. All right. And then I put it like this and then spin and see what happens. और मैं ज्यादा नहीं करूंगा. And it becomes like a sprinkler. तो 3 तरीके से ये खिलौना काम करता है. Simple toy works in 3 different ways. एक तरफ से सीटी, दूसरी तरफ से spray, like a होली पर जो होता है, और तीसरी तरफ से sprinkler. Now, why does it happen? Why does it work like that? Why does 2 simple? Something must be wrong. Why? एक तरफ से सीटी बजी, क्योंकि अगर ये दोनों straws same होती तो ऐसा होता कि behavior भी same होना चाहिए था. And I can do the same toy in grade 3 where we can go out and play like these kids were playing, or I can go out in the sun and in the ground and say, at what angle should I do this so that the water goes out the farthest? And no matter what you read in grade 11, it is not 45 degrees. 45 degrees पर सबसे ज्यादा दूर पानी नहीं जाता है. In fact, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर आपको ये तो लॉस्ट ब्रॉन्ज है, बट आपको एक और अगर मेरे पास वो पड़ा है तो मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, ये रहा. 7 अगस्त 2021, टोक्यो, जापान. नीरज चोपड़ा ने अपना भाला 36 डिग्री पर फेंककर भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया.
1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया की सबसे बड़ी तोप ने 130 किलोमीटर दूर गोला 55 डिग्री पर फेंका। इन दोनों इवेंट्स को देखकर ऐसे लगता है कि क्लासरूम से बाहर की जिंदगी साइंस और मैथ के कुछ अलग ही नियमों पर काम करती है। करिकुलम के अनुसार तो प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फेंकें तो सबसे ज्यादा दूर जाती है, लेकिन नीरज ने अपना भाला 45 से कम और बंदूक ने अपना गोला 45 से ज्यादा पर दागा। बड़ी नाइंसाफी। करिकुलम और रियल लाइफ की इसी दूरी को दूर करने के लिए सीबीएसई और आईआईटी गांधीनगर टीचर्स डे के दिन एकलव्य सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 और पीसा दोनों ही इन्हीं मुद्दों पर जोर देने की बात करते हैं। एकलव्य में हम ढेर सारे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इंटरेस्टिंग, दिमाग की बत्ती जला दें ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। और लोकली अवेलेबल मटेरियल से ऐसे इंगेजिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे साइंटिफिक टेम्पर विकसित हो। ऐसा करने से नीरज चोपड़ा के भाले का ज्ञान, तोप के गोले का विज्ञान और प्रोजेक्टाइल के सिद्धांत का समाधान सब अपने आप हो जाएगा। तो जुड़िए हर रविवार 4 से 5, लॉकडाउन में भी लर्निंग पर ना आने पाए आज। बच्चे, टीचर्स और पेरेंट सभी के लिए गणित और विज्ञान समझने का एक अनोखा प्रयास। और आपको यह भी पता चलेगा कि गुब्बारे की हवा पीकर गौरव की आवाज का ये हाल क्यों और कैसे हो गया। So anyways, the idea is, I hope you saw that this simple toy that I had, this simple toy is absolutely amazing, right? इसको देखकर हम ये चर्चा कर सकते हैं कि कितने एंगल पर हम ये स्ट्रॉ लगाएंगे तो सबसे ज्यादा दूर पानी जाता है। और आंसर इज नॉट 45. दैट्स व्हाई नीरज चोपड़ा व्हेन ही वन द गोल्ड डिड नॉट थ्रो इट 45. He threw it 36 degrees, and we had an interesting conversation. National Games, and he came here, and I was talking to him, and I said कि आपने 36 पर क्यों फेंका? And of course, we had a very nice conversation. कभी आपको मौका मिले तो देखेगा. But the बंदूक, the Bofors, the gun that we have, they will fire at 51. This why, and something is wrong. And I think that is what the curriculum has to be about. When we talk about projectiles, when we talk about these things, we have to make these toys in our classes to make our children understand and enjoy. And I'll just take a few minutes to quickly जो मैं आपको कह रहा था, ये बड़ा सुंदर खिलौना है और मैं चाहूंगा कि आप ये खुद बनाएं और करें, और अगर आप कर पाए तो हमें ये भेजें, क्योंकि ये वो खिलौने हैं जिससे वो बोलते हैं ना कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपका, so these are basically 4 squares. ये करके हमने एक छोटा सा ये डब्बा बना दिया, basically an open box. I hope you can see this. Basically it's just 4 squares and we have joined it so that it's become an open box, right? बाहर कुछ और चित्र हैं, अंदर कुछ और है. One side is, we have marked it, the other side, and what you have to do is turn it upside down. बाहर का साइड, अंदर का साइड बाहर आ जाए, बाहर की साइड अंदर आ जाए. 8 moves, and you cannot fold this like a paper. मतलब कागज की तरह नहीं, sorry, कपड़े की तरह नहीं मोड़ सकते हैं. You cannot fold it like a paper. You have to just, do some folding like this. आप कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. These are all valid and allowed moves, but you cannot fold it like a paper. And I'm trying to tell you this story because ये जब खिलौना मेरे पास आया था about 2 years ago, and I spent about 2-3 days working on it. और जब उसके बाद जब ये I could bring it upside down. I hope you can see it, right? ये बाहर से ऐसा है और अंदर से दूसरा. ये just a simple paper, right? जब ये हो पाया तो ऐसे लगा कि भगवान मिल गए. तो मैं चाहता हूँ आपको और आपके बच्चों को भी भगवान मिल जाए. 3 दिन तक लगाना पड़ा, 3 दिन तक लगे रहे. क्या हम अपने बच्चों के साथ ये कर रहे हैं? इसलिए ये खिलौने जरूरी हैं. नंबर तो आप दिला देंगे, लेकिन कौन देखता है? आज की तारीख में अगर गूगल को जॉब भी करनी हो, इन आवर लैब we have 2 people who have never gone to school. There is one guy who's never gone to school. So when we had to hire him in IIT, मुझे 2 पेज का नोट लिखना पड़ा क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं गया. That guy has never been to school, and he's doing such a phenomenal job, right? And we are only focused on these numbers. I think there is so much more beautiful to education that we are missing in our schools and classes, and that is the most important skill coming. अभी जो आने के समय में जरूरत पड़ेगी. हमको क्या पता है यार, तुमने नंबर आए कि नहीं, तुम्हारे ना समझ आया क्या और मजा आया क्या? और मजा जब आएगा तो आप अपने आप एक्सप्लोर करके समझ लोगे. Are we able to do that is the question. And I think that's where, like I was saying, we have to do something which talks about this multisensorial. हम, and breaking these subject boundaries. मैं आपको जैसे दिखा रहा था, अब मैं फटाफट से खिलौने दिखाता हूँ, और जूझने से काम होगा. हमको जूझ के करना पड़ेगा काम. हमको we have to make sure that
we are giving our children things that make them persevere. मेरे हाथ में ये कुछ ताश के पत्ते हैं और ये ओवरहेड में दिखा देता हूँ. ये ताश के पत्ते हैं और ये मैंने शफल कर दिए. These are all just A, B, C, D. And now imagine if I have to sort them. Right? Sort करना तो क्या करेंगे? लाइन से लगाना हो तो पहले A ढूंढना पड़ेगा, फिर B ढूंढना पड़ेगा. B ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा यार इसमें तो, है ना, जिंदगी निकल जाएगी. एंड इतना टाइम नहीं है अभी. तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ मैं कैमरा, आपको दिख रहा है. मैं क्या करूंगा, ये ताश को करते हम लोग और ये डंडी लेगी, एक डंडी, और इसको इसमें डाल दिया. और डंडी डालने के बाद कुछ ताश हमारे बाहर आ गए, उनको बाहर खींच दिया. 5 छेद है, दूसरे में डंडी डाली और बाहर आ गए. तीसरे में डंडी डाली और बाहर आ गए. चौथे में डाली, बाहर आ गए, तो उनको आगे रख लिया. और 5वें में डाली और बाहर. और ये देखिए क्या हो गया. अपने आप सॉर्ट हो गए. एंड दिस इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स वर्क इन. क्या हम ये बना सकते हैं? क्या हम ये बनाते हैं अपनी क्लास में? बिल्कुल बना सकते हैं. एंड बाय द वे, ऑल द टॉयज दैट होपफुली वी विल हैव टाइम टू शो यू आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. ये आपको कुछ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. हमारी लैब में, हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब में आप जाकर देखिए और बनाइए. दैट इज द होल गोल. आवर लर्निंग हैज टू बिकम एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग. We will have to bring back that gleam in the eyes of our children and our teachers by things that we do in the class and not just cerebrally doing things on the note. That is required. नोटबुक और पेन जरूरी है, लेकिन खाली वही नहीं है, सिर्फ वही पढ़ाई नहीं है. इसमें बाइनरी मैथमेटिक्स छुपी हुई. दिस इज हाउ आवर कंप्यूटर्स वर्क. दिस बंद वाला छेद इज अ 0, ये खुला वाला जो है ये 1 है. उस तरह से हमने कुछ करा और इसको सॉर्ट कर दिया. उसी तरह से, and by the way, in the first year course that we teach to IIT students, this is the activity that we do. And ये 5वें में भी हो सकती है, grade 5 में भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ फर्स्ट ईयर में करते हैं. जब बच्चे आते हैं उनको ये बनाते हैं. एंड देन दिस इज द चैलेंज, राइट. यहाँ पर तो 3 ही होल है. इस तरफ इस कागज में 5 थे, इस तरफ 3 है, लेकिन इनसे भी सॉर्ट हो जा सकती है. दिस इज बेस 3 बिकॉज यहाँ पर 3 तरीके के छेद हैं. ये देखिए, एक ऐसा छेद है जो बिल्कुल खुला है, बिल्कुल बंद है. ये पूरा खुला है, ये पूरा खुला है और ये आधा खुला है. This is 0, this is 1 and this is 2. Little bit, I mean, I'm not trying to sound it, make it more complicated, but this is exactly how and why the computers work, right? Are we showing this in our schools and classes? एक सरल सी चीज है, मैं आपको करके दिखाता हूँ. होपफुली आपको ये पसंद आएगी. बहुत सिंपल सी स्ट्रॉ, इसके 2 भाग कर दिए. इसको मैंने इधर से तिरछा काटा है और इसको so that it becomes like a beak of a bird, और इसको 2 भाग में ऐसे 2 पीस करने के बाद दोनों में कर दिया. और इसको अब मैं मुंह में रख के जोर से फूंक मारता हूँ. क्या होगा? ऑलराइट, आवाज आ रही है? ये आवाज आई या जूम ने काट दी? आवाज तो आई थी. ओके. ऐसा क्यों हुआ? ये मोटी क्यों है? ये अक्सर आपके घरों में आप लोगों को शायद ऐसी आवाजें सुनाई देती हूँ रात को, जब आप लोगों के हस्बैंड वाइफ में खूब लड़ाई हो रही है, तो यू कैन फिगर आउट ये किसकी आवाज है और ये किसकी आवाज है. ऑलराइट, अगर आपको अभी, एंड व्हाई, बिकॉज दिस इज लोअर लेंथ, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. और ये लंबाई ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है. और अगर हस्बैंड की वाइफ को वाइफ की आवाज में बदलना हो तो हम क्या कर सकते हैं? धीरे 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 करके हस्बैंड की वाइफ की आवाज में बदल जाती है. क्यों? क्योंकि आपने धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम कर दी. और ध्यान रहे, कई बार ये प्रयोग करते करते आप इतने मशगूल हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और ये फिर नाक पे चल जाती है. और तब जो फ्रीक्वेंसी आती है तो वो तो एक अलग ही लेवल की है. वो स्ट्रॉ से नहीं आएगी, वो कहीं और से आएगी. एंड नाउ इमेजिन इफ आई ब्लो these things together. This is like the sound of a train horn because I am playing 2 frequencies which are very close by.
और जो पास की होती है वो आपस में इंटरफेयर करेंगे तो ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे जाता है, या ट्रक का हॉर्न, बिकॉज उसमें 5 फ्रीक्वेंसी एक साथ बजती है. सो आई टॉक एंड देन आई कैन मे बी मेक अ होल हियर. मैं इसके अंदर एक छोटा सा छेद कर सकता हूं, और अब या इस वाले में नहीं, दूसरे वाले में कर देता हूं, और आपको देखिए क्या सुंदर चीज आपको दिखाई देगी. ये मैंने यहाँ पर इसको ये करा, और इसमें ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से एक छेद बना दिया और इधर एक और छेद बना दिया, तो 2 छेद कर दिए. ये थोड़ा मतलब बड़ा कर देता हूँ, छोटा हो गया, और इस पे मैंने अपनी उंगली रख दी. अब जोर की फूंक मारते हैं. कितनी तरीके की आवाज आई? 2 छेद हैं, 3 तरीके की आवाज आई, बिकॉज 2 छेद से हमने इस पाइप को 3 भागों में बांट दिया. And that's why 3 different frequencies, and that's why I could play, and that's why our bansuri, the regular flute that we have, has 6 holes because it can play 7 notes. Now I have connected. I can do so many experiments. उसके लिए बहुत पैसा भी नहीं चाहिए आपको स्कूल से कुछ I don't know प्रिंसिपल से पैसा मांगने की. एक सिंपल सी स्ट्रॉ है. कितना काटे की स के बाद रे बजे, कितना काटे की रे के बाद ग बजे, कितना काटे की ग के बाद म बजे. And it is not linear. It's not like 1 सेंटीमीटर काटा तो स से ग. क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्पीड डबल हो जाए तो क्या मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपकी स्पीड 50% बढ़ जाए तो टाइम कितने % कम होगा, राइट? You ask these questions and we have not done these things in our schools and classes. We have not talked about that. अगर आपकी स्पीड 50% बढ़ती है तो टाइम 50% कम नहीं होगा. That is inverse proportion. Similarly, frequency and wavelength are inversely related. So if the speed, frequency increases 20%, 10%, let's say from sir to ray, the length will not decrease 10%. आप करके देख लीजिए. पर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके हाथ में स्ट्रॉ को लेकर बजाना पड़ेगा. 7 स्ट्रॉ लगती है, एक स्टूल का बैंड बन जाएगा. एंड यू डोंट हैव टू आस्क द मैनेजमेंट कि मुझे बहुत पैसा चाहिए कि मुझे स्कूल में कुछ बढ़िया फिजिक्स करनी है. लेकिन हम सिर्फ साधारण से वो एक कौन सी टेबल होती है, वो एक टेबल होती है ना, वो ऑप्टिक्स टेबल. अरे यार, मतलब फिजिक्स की लैब में जाके ऐसे लगता है कि कंटाल आ गया. कहाँ भागे, कैसे भागे इस लैब से, इस स्कूल से. वो एक ऑप्टिक्स की टेबल रखी रहती है, उसमें नोक रखी रहती है, उसको नापते रहो. देयर इज नो जॉय. एक कहीं प्रिज्म रख देंगे, वहां सुई गाड़ देंगे, बोलेंगे इसकी लाइन बनाओ. हमें पहले से उत्तर पता है कि टेढ़ी हो जाती है. कुछ मजा आया क्या? नहीं. एंड ब्यूटिफुल एक्सपेरिमेंट्स दैट वी कैन डू विद ऑप्टिक्स, बट वी आर नॉट. एंड आई थिंक वी आर जस्ट anyways, once I get into this mode, I can keep. But I'm saying the most important thing that we have to provide our children is 1, like I said, धमाल, मजा आया कि नहीं. 2, तारे जमीन पर. और तीसरा, कोई ना कोई ऐसी बात हो जो आंखों में आपके चमक ले आए, जो आपकी बातें दिल को छू गए. 3 idiots. And that is how our education, in my opinion, has to be. बचे हुए टाइम में मैं आपको फटाफट कुछ चीजें दिखाता हूँ. होपफुली ये हमने एक साधारण सी क्या कहते हैं ये. By the way, we should ask people if they have any questions. Feel free to ask. ये एक मोटर के ऊपर दो बत्तियां लगा दी, और इसको जब हम घुमाते हैं तो ये जल जाती है. एक तरफ ये वाली जल रही है, एक तरफ करते हैं तो लाल जलती है, इसको उल्टा घुमाते हैं तो ये हरी जलती है. Okay, so here you go लाल and here you go हरी. तो ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ से करने से लाल जलती, और ये मोटर है लेकिन मोटर जनरेटर में बदल गई. तो ऐसा क्यों हुआ ये आप सोच सकते हैं. बहुत सुंदर खिलौने बनाए थे हमने, मैं आपको दिखाता हूँ. ये 3 सीडी हैं, और तीनों सीडी के अंदर एक सीडी थोड़ी सी हमने ऑफ सेंटर रखी है, वो बाहर निकाल दी है, बीच वाली सीडी. तो इसमें जब हम फूंक मारते हैं कुछ नहीं होता. इसके नीचे हाथ रख दिया, आवाज आई. कई बार ये जूम आवाज काट लेता है. तो ओरिजिनल साउंड फॉर द yes you are audible. yeah. सीटी की आवाज होपफुली आपको आ रही है. ये रेफरी की सीटी है. एक स्ट्रॉ के अंदर कुछ और चीज लगा दी, और देखिए किस तरह से सीटी बच जाती है. इसको अगर काली करके फूकें तो कुछ नहीं होगा. इसको मैंने अपने उंगली से कप कर दिया, और अब फूक मारते हैं. नहीं बजेगी, और ऐसे करेंगे तो बजने लग जाएगी. सो द रीजन आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस इज दीज आर माय मल्टी सेंसोरियल इनपुट्स. इस तरह से अगर हम जब साउंड के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए क्या होता है. एक साधारण सा टी जंक्शन है, यहाँ पर एक पाइप पॉलीथीन लगा दिया, एक पाइप है, ये एक रबड़ का वॉशर है ताकि हवा बाहर ना हो, और अब इसको यहाँ रखा.
Bigul, this is, and because what happens is when you blow the air cannot come out, it goes from up, यहाँ से जाकर ऊपर से निकलती है, और ऊपर से निकलती है तो ये membrane vibrate करती है, which leads to the air column inside vibrate, and I can actually put a paper here, and वो ऐसे ऐसे करते हैं ना trombone में, वो कर सकते हैं आप सारे, जहां से अच्छा इसी पे बजा सकते हैं. This is exactly what we did in 30-30 STEM. आप देखिएगा the episode on sound where we played flute, सारे जहां से अच्छा इसी से बजाया था. And imagine this is what if we start to do in our classes, what is going to, it will be just an amazing thing. Overhead, सुंदर खिलौना है, मैं आपको दिखाता हूँ. And we did this very recently. We said, look, there is this very abstract notion of area of triangles, right? जिसमें हम बताते हैं the area of triangle is base into height. These are two different triangles, right? They are both, base is the same. एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है, और दोनों में हम बोल देते हैं कि इस वाले में तो समझ आ जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका ये बेस है और ये इसकी आधी हाइट है, तो इसका मतलब आई कैन फोल्ड इट इनटू अ रेक्टेंगल, एंड दिस इज द सेम एरिया. दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट बिकॉज दिस इज हाफ द हाइट. व्हाइल दिस इज ट्रू, हाउ अबाउट दिस? यहाँ पर हाइट क्या है? दिस इज द बेस एंड द हाइट इज दिस मच, राइट? सो आई कैन डू द सेम थिंग, आई कैन फोल्ड इट लाइक दिस. Again, half base into height, और ये दोनों एक के ऊपर एक रख सकते हैं, and you can show that they are exactly the same and they are same as half base into height. They will fit in this rectangle. Half base into height. But now my learning is experiential. Now I have done something. I have actually made an object. और उसको जब हमने हाथों से अपने बनाया और करा और समझा, तो वो जो समझ है वो एक दूसरे लेवल की होती है. ये सीटी में पानी है, वो साउंड वाले में खिलौने रखे थे. ये हमारी चिड़िया है, इसमें फूंक मारते हैं, प्यासी है नहीं बजेगी, इसी के अंदर पानी भर दिया, इस वाली में प्यासी चिड़िया के मुंह में पानी डाल दिया तो अलग तरीके से बजेगी. ये हमारा जनरेटर है, इसके अंदर की चुंबक गायब हो गई. आई डोंट नो इफ आई हैव दैट right here. Anyways, I have tons of toys. This is a charkha generator. This is a charkha on which we have put a LED. और यहाँ पर जब हम इसको घुमाते हैं तो ये ये बत्ती चल जाएगी. लाइट ज़्यादा है इसलिए you might not be able to see, but instead of making a cloth, this is producing electricity, and all of these toys are made by these. मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ. दिस इज द बक्की लैम्प, ये भी जल जाता है. होपफुली आई कैन शो दिस टू यू. ये यहाँ पर लगा. Okay, there you go. And hopefully you can, let me switch off the lights. You can see this lamp. This is a bucky lamp. This is 12 pentagons and 20 hexagons, and you can join them with rubber bands and make your own lamp. And this is exactly the shape of C60 structure or your football. जो आपकी फुटबॉल है जिससे खेलते हैं वो बिल्कुल exactly ऐसे ही लगती है. This along with hundreds of other toys that you can make with these sheets that we provide. और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की वो sheets होती हैं. And you can all make them using these sheets. Those pieces come out, and out of those pieces you can make these toys on your own. So पीछे रखिए. Let me just get that. These pieces of paper, these sheets, I am missing that right now. Anyways, these are like Lego sheets, which all these pieces come out, and you can join them by rubber band. So you just, all you have to do is, when you talk to us, let us know, and
Sorry about that. We had something going on in the house. And so these pieces, like I said, all of these things that you make, these are these pieces of wood, MDF laser cut wood, all of these. And let me take a minute to show you the kind of things that we have. These are the toys that are on your screen. All of them, these lamps, all of them you can make the ones that you, this is a car that when it moves makes a sine wave. All these sheets come in this form. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से कागज, ये these sheets, these pieces come out and you can make this with your own rubber band. Join them with rubber band and make. Oh, Amausi ki kahani I wanted to show you, but I guess we're running out of time. Might not be able to. But this is an amazing story, maybe people say that we have 75% water on Earth, but it's 0.1%. 75% of the surface of Earth is covered with water. But if you look at this picture, this is the real picture of how much water there is. The diameter of Earth is 12,000 kilometers, but the water in Earth is only 1,385 kilometers, 10 times less, which means volume is 1,000 times less. It is just one drop as compared to this big drop of water. And, this can also be an example. And related to that was this story of this man whose life was saved because he understood density. He fell in Atlantic and survived for 10 hours because he did exactly opposite to what was mentioned in the textbook and in the curriculum or in his manual. He fell down, he took these two boots out, put them out in the air. जबकि लोग बोलते हैं कि अपना हल्का कर दो ताकि it becomes easier for you to sort of swim. He did the opposite. He took these boots out, put them in air, and इसके अंदर हवा भर गई, पानी निकल गया और इसने अपने इसके नीचे रख दिया under the armpits, and his volume increased by 10 liters and his head came out of water, and he survived for 10 hours because he understood the definition of density. And this is a true story. I'm not sort of making this up here. That is, let me just see briefly if I have anything else or lots of different things that, like I said, the goal of what we try to do is to bring back this kind of gleam in the eyes of our children. Dimag ki batti jala de. This is something that I want to talk about. We are working on this thing, or we have this thing called the Khoji box. A box which has, this is the kind of box. A small box which I always carry. ये मेरे पास पड़ा हुआ है. इसका काफी सारा सामान अभी मैं आपको दिखाया. बट ये एक डब्बा है, 3 किलो का डब्बा है, 100 खिलौने हैं. एंड आई थिंक दिस इज अ मस्ट फॉर एवरी टीचर एंड एवरी स्कूल. एक डब्बा जिसके अंदर 100 खिलौने हैं और इन खिलौनों को इस्तेमाल करके सारी चीजें हो जाती हैं. मजा आ जाता है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. एंड बनाने में मजा आ जाता है. और खिलौने होते हैं तो आप उसको जो भी चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट not lakhs or million. I mean, we are talking about the joy. 15,000 रुपए में अगर कोई डब्बा है 100, जिसमें 100 खिलौने हो, साधारण खिलौने, लेकिन ऐसे खिलौने जिसको खेलकर या देखकर आपकी आंखों में चमक आ जाए, जैसे इन बच्चों की आंखों में. Just look at these girls made this, and this is in remote village in UP. Hopefully you can see this. This is the hand pump these girls have made. This is the hand pump that these girls have made on their own. Let me show you this other one. This was just very heartwarming to see this. पानी पे दबाव डालती है. जब पानी पे दबाव डालती है तो अभी इसके अंदर से कहीं हवा तो पास नहीं होगी, तो जब गैस जब दबाव डालती है तो ये पानी इस पाइप में चढ़ जाता है रिफिल में. तो look at the joy in the eyes of this girl, and I think that is what I'm talking about. This is what, in my opinion, NEP is. I don't know if you saw this picture. This is a picture of the high jump जो medal मिला इंडिया को athletics में in the Commonwealth. This person, we talk about this. In fact, you see, this is the way people do high jump, right? Or high jump में you can say this person is going over the top, but the center of mass is actually going below the bar. Very interesting things in sports that we can talk about. This is the picture of PT Usha winning the gold medal, and I think the reason she lost the gold medal was because of the speed of the sound. That is what
यू 8 अगस्त 1984 लॉस एंजलिस अमेरिका 400 मीटर का फाइनल। 5वीं लेन में खड़ी पीटी उषा के कंधों पर करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें टिकी हुई थी। 55 सेकेंड की इस रेस में पीटी उषा एथलेटिक्स का भारत का पहला मेडल पाने से 1 सेकेंड के 100वें भाग से चूक गई। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है जैसे अगर कुछ एक्स्ट्रा कसरत करी होती, कुछ एक्स्ट्रा जिम जाते, कुछ एक्स्ट्रा मसल्स बनाई होती तो नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन हमें लगता है कि यदि साउंड और उसके विज्ञान की बेहतर समझ होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के इस शुभ अवसर पर आजादी की पूर्व संध्या यानी रविवार 14 अगस्त को सीबीएसई और सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर आपके सामने 30-30 एकलव्य प्रोग्राम लेकर प्रस्तुत होंगे। उस खोए हुए कांस्य पदक यानी द लॉस्ट ब्रॉन्ज को देखेंगे और कैसे साउंड की एप्लीकेशन और कंसेप्चुअल समझ हमें वो ब्रॉन्ज मेडल दिलवा देती। So anyways, we'll not spend time on that, but that's the idea, right? This is how our learning and education has to be. For instance, this is a, I don't know, आपके सामने ये सवाल है, इस पिक्चर में क्या गड़बड़ है? Can you spot the bug in this picture? This is a multi-grain आटा की फोटो है, इसमें wheat है, maize है, this whatever, and if you look at the ingredients, this is the ad that came in every single newspaper front page in India, and I don't know whether हम लोगों ने इसमें कुछ देखा समझा, बट क्या हम इन चीजों को समझ पाते हैं? क्या हम इन चीजों के बारे में चर्चा कर पाते हैं? क्या हम इस तरह के खिलौने अपने बच्चों को दे पाते हैं? कल्पना करिए इस तरह से आप अपने लैब, दफ्तर या ऑफिस जाएं। 2 टूटे हुए पहियों से बनी इस साइकिल पर बैठकर गणेश भाई सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर में जा रहे हैं। ऐसा करने से दिमाग की बत्ती जल जाती है। और यदि आपकी भी इस तरह के खिलौनों को बनाने की रुचि हो तो संपर्क करें CCL IIT GN। So I don't know whether this is something that we made a while back, but yeah, in fact I will just do this last thing and I will stop. There are lots of toys, but I don't think I'll have time. और आप लोगों के पास भी समय है कि नहीं, बट ये आप प्रयोग जरूर करिए और आपको अगर लगता है तो समझ आए तो बताइए। साइकिल के किसी भी साइकिल को लेकर जब हम साइकिल पर पेडल चलाते हैं, जब हम साइकिल में पेडल चलाते हैं तो साइकिल में जब पेडल पीछे की तरफ जाता है तो साइकिल आगे बढ़ती है। तो हमें लगता है कि साइकिल में पेडल पीछे करें तो साइकिल आगे जाएगी, बट यू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, okay? You tie a thread on the pedal when it's at the bottom and pull it and see where the cycle goes. Does the cycle go backward or the cycle go forward? And you will be shocked, and you will be absolutely shocked, and then try to send us the reason as to why this is happening. And if you can just send us the reason why this is happening and what is it that we should do to make it go the other way. That is what NEP talks about. और ये NEP के जो भी buzzwords हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। NEP क्या कहती है? NEP कहती है कि multidisciplinary हो, that you don't keep it in math है तो math ही करेंगे और arts को हटा देंगे, but all these subjects come out together. There has to be sense of wonder, story and context, hands on and experiential होना पड़ेगा. There has to be multidisciplinary approach. ये सारी चीजें, ये हमने खिलौने यहाँ पर हमने बनाए हैं, ये बिल्कुल स्ट्रिंग आर्ट से बड़ी सुंदर चीजें। ये 2 का पहाड़ा है, दिस इज अ टेबल ऑफ 2। कोई पूछे कि इसमें टेबल ऑफ 2 कैसे है तो आपको देखना पड़ेगा हमारा एपिसोड। ये टेबल ऑफ 2 है, ये टेबल ऑफ 3 है। बेसिकली एक गोले में छेद करके 2 का पहाड़ा, 2 को 4 को 3 से 6, 4 को 8, 5 को 10, 11 को 22 से जोड़ दिया तो ये बन जाता है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये बन जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वेरी इंटरेस्टिंग मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। hands-on and tangible models, which is what you have to do. Context and stories, this is what I was trying to tell you. Some of the most interesting things I felt we are missing from our curriculum is the stories, and we'll have to sort of focus on that. And then of course the sense of wonder and exploration. ऐसी चीज करें कि दिमाग अटक जाए. Hopefully this is the toy box that I was talking about. Hopefully this toy box goes to every single school and classes, and then the learning that will happen will be empowered teachers and whatever. तो मैं आपको ये बंद कर देता हूँ। जैसे आप ये देखिए, सुंदर चीज है। आई डोंट नो आपको ये दिखेगी कि नहीं, बट ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। These are our toys, 1000+
activities and toys. All of these, if you are interested, let us know. This is the Eklavya registration that I was talking about. इसका feedback. मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार गणित और विज्ञान में पढ़ने का टीचर होने का गर्व हो रहा है. Imagine if this is what we are talking about, right? This is what मेरी 75 वर्ष की माता जी आपकी आवाज सुनकर उठ गई. So you know, पहले एपिसोड कर देखकर ऐसा ही इतवार रहता है जैसे पूरी टीम को. 30-30 is better than 20-20. So thank you so much. This is what we try to do, bring back that gleam in the eyes of our children. This is our email. If you know anything that you felt, or comments or questions, please do ask. Please do send us this an email, ccl@iitgn.ac.in, ccl.iit, and then maybe subscribe to our channel too. तो आपको thank you so much for your time. I hope, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो फोन को गद्दे के नीचे डाल के चले गए थे नहाने, बट अगर आप सुन रहे हो तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for this amazing session, sir. I mean, I think everyone had a lot of fun, including us. So I'm sure they'll have a lot of questions for you that they might want to ask. But before we proceed to the Q&A session, I would like to invite Mr. Aditya Gadiyar, who is the VP Brand Marketing at LEAD, to give some brief information about what is LEAD and what we do at LEAD. And till then, the audience can type in their questions in the Q&A session, in the Q&A button, or type them in the chat. But अगर आप chat में type करोगे, so sir might miss it. So request you to just add it to the Q&A button. Yeah, Prajakta, can we have the deck, please? Yeah. And while Prajakta puts up the deck, Professor, I have to really state this from my heart. You don't have to, but I'll be happy to hear. But we've been doing this webinar series for the last 3 months now, and by far this has been the most enjoyable and at the same time the most insightful session that we have had. I think what all of us really need is somebody to really demystify and deconstruct this really NEP, which has become like the buzzword, and I think there's no better way to do it than what we just did for us for the last 1 hour today. So thank you so much. I think personally also I have taken away so many insights from this session, and we will definitely be circulating the recording of this webinar internally to all our stakeholders as well. So thank you so much, sir. And it's really inspiring that a lot of what you spoke about is also what we are trying to do here at LEAD, right? And the LEAD purpose started with a very simple mission, is to say that how can we deliver great quality education to the smallest corners of a country, and especially in the tier 2, 3, 4 towns, where getting access to great quality education was historically difficult, but now with technology we have an opportunity to solve that problem. So we are India's largest school edtech platform, and with our integrated system, what we've been able to do is we're present in more than 400 cities with 3,000 plus schools who have partnered with us, and with 25,000 very, very happy teachers and 1.2 million students who are benefiting from the LEAD program. Prajakta, if you can just go to the next slide. And what Professor spoke about, right, is very much at the heart of what we're trying to do here at LEAD, right? We firmly believe that learning needs to be multimodal, because learning is just not written or consumption of verbal information, but it is also audio-visual in nature. It is also experiential in nature. So like what Professor was showing, we also have a lot of experiential learning kits which are given to our students. Our content is not only textbook in its format, but we also have audio-visual content. Learning and teaching happens in LEAD schools via tablets and smart TVs. And lastly, we also believe that learning is kinesthetic in nature, sensorial, what Professor Jain spoke about, right? And what we have at heart of our system is that for all the 4 stakeholders in the education ecosystem, which is teachers, school owners, parents, and students,
we have a solution which can help ease the friction points for all of these. So we help teachers with their class prep. We help students to deliver better learning outcomes, right? And then again, going back to what Professor Jain was talking about, right? The existing school system that we have, a lot of it is so focused on delivering academic results, right? But true conceptual understanding is what is important for the students to have confidence to succeed in life. It is not just about whether I managed to pass my 5th grade or 10th grade exam properly, but if I'm given a problem, and what Professor Jain also spoke about, am I able to break down the problem to first principles and then solve it from there? Do I understand what density really means? Do I understand how frequency of sound can be used? So we firmly believe in doing first principle conceptual understanding led kind of a system, and we use technology to solve all the friction points for school owners, teachers, parents, and students. So and Prajakta, if you can just go to the next slide. And we've been very, very successful with it. What we've seen is through the implementation of the LEAD system, we've been able to deliver 2x improvement in teacher learning out. Teacher pedagogy, we have been able to deliver 70% mastery. So within the first 12 months of implementing our system, what we've seen is that 70% of the students are able to have 70% or higher scores in the assessments which are recorded. And lastly, this is something which we're very proud of, because this is something which is patented. We have realized that English, if it is taught as a skill rather than as a language, we are able to see improvement in the learning gap significantly. So in 12 months of the LEAD system, we are able to see a 1.5 years of reduction in the learning gap of English. So these are so we guarantee these learning outcomes, and that's what really is at the heart of the LEAD school system. And that's it from my end. But before, I'm sure you guys are eagerly waiting for Professor Jain to answer your questions. One short video from one of our school partners who has really enjoyed the partnership, and she speaks about how our system is already NEP compliant. Yeah, Prajakta, can you play the video? लीड वॉज ऑलरेडी डूइंग इट कैसे NEP ने बोला कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, राइट, लर्निंग बाय डूइंग। तो लीड ऑलरेडी हैड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान्ड थी, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो एक्टिविटीज़ वहाँ पे थी। एक तरह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। लीड वाज थिंकिंग मच अहेड। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब इट वाज क्वाइट प्रोग्रेसिव। वो कुड विजुअलाइज के आने वाला टाइम कैसा आने वाला है एंड कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि बहुत ही बड़ा इसका सपोर्ट रहा। पहले ये लग रहा था कि टीचर्स वो सेइंग कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है जब हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम इतनी देर में तो इतने चैप्टर करके बार बार लिखवा के याद करा सकते हैं। तो वो रोट लर्निंग थी, यहाँ पे याद करा सकते हैं। तो लीड ने ये बोला कि याद कराने की ज़रूरत नहीं है, लेट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, राइट। यही NEP बोल रही है। व्हाट इज़ न्यू इन एजुकेशन? न्यू इन एजुकेशन मीन्स समथिंग which the child could create after understanding, उसका अपना कुछ बनाया हुआ हो, so that he has sense of achievement and accomplishment, right? कि मैंने किया है ये, मैंने ये सीख के ये understand करके किया है। It is बहुत सारी चीज़ों में अभी जैसे पीछे छुट्टियाँ थी, लास्ट ईयर की बात है, कोविड टाइम था, तो कैंप लगा हुआ था इसका, लीड का कैंप, समर कैंप था। तो हमने उसका नाम दे दिया थ्रू स्ट्रॉ हैट करके। तो बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें, इतना कुछ कुकिंग में सीखा, कुछ डांसेस सीखे, कुछ और एक्टिविटीज़ सीखी। एंड व्हेन वी केम बैक
तो बच्चे स्कूल आने शुरू हो गए. देन सेक्शन वाइज आई टॉक्ड टू चिल्ड्रन एंड आई सेड कि अच्छा आप ये बताओ कि व्हाट डिड यू लर्न, आपके समर कैंप में क्या था, आपने लीड के समर कैंप में क्या किया और आपको क्यों अच्छा लगा. सो नो दे सेड हमने ये किया और डिफरेंट ग्रेड्स थे. जब हम एक स्टेज को अकम्प्लिश कर लेते थे तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था. तो वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो आ जाता था लीड की तरफ से, वो दैट यूज टू गिव विंग्स टू चिल्ड्रन कि देखो हमने कुछ अचीव किया, है ना. तो आई थिंक यू नो इट इज़ वेरी गुड एंड डे बाय डे आई थिंक जब पहले इतने अहेड थे लीड के जो एजुकेटर्स जो इतना कुछ देख सकते थे, विजन कर सकते थे, तो आने वाले टाइम में भी बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ज़रूर आएंगी जो आई थिंक अगेन इट विल बी अहेड ऑफ ऑल द थिंग्स. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. Thanks, Prajakta. So, for all those of you who would like to know more about us and the work that we do at Lead and how we can partner you guys and how we can help you deliver exceptional learning outcomes for your students, we are very happy to connect with you. We will be reaching out to each one of you and taking the discussion forward. And the Lead system, very proud to say that, is already NEP compliant. So, with that, I'll hand over to Professor, and I'm sure. I'm also looking forward to the question answer session eagerly. Yeah, Prajakta. If you can just moderate this session. Sure. So I think we just have 3 questions in the Q&A button. I'll check the chat if we have any. अगर किसी को पूछना हो and if they can get themselves unmuted, that will be good. They can ask.